Hi, I'm going to fill my car's wiper reservoir. It's completely empty and I thought I could just fill it with soap water, but then I later on got to know that there are separate types of washing liquid that you need to fill depending on the season, because in winters if there's more water content in a liquid, then it freezes up and then that destroys the piping of the car. So I have to make sure that I put in the correct liquid at the correct time of the year into my car. Now this is a nice way for me to introduce you my today's video. Today's video is all about things like that where I've experienced for the first time in Europe, which I never experienced when I was in India. So I hope you enjoy the video while I finish this up. And yeah, my name is Rahul Rathod. You're watching Bucket List Adventurer. First of all, I think this experience of crossing the border in Europe between the different countries, I think is not possible in India. I might be wrong. I don't know if you can still cross out of India using a four-wheeler by your own car. I guess you will need certain amount of approvals and permissions. But यहाँ पे crossing to another country is just like crossing a state. In fact, even more easier, क्योंकि इंडिया में एक बार स्टेट के बॉर्डर पे भी नाकाबंदी रहती है. यहाँ पे वो भी नहीं है. It's very easy to cross the border and go visit different countries here, and that is again one of those experiences for me which was new. So that is in fact my first experience that I would like to put it out as the best experience, that you could travel across the borders without much hassle. So शॉपिंग का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम है. इंडिया में जैसा होता है यहाँ पे भी वैसा ही होता है. यू हैव दिस बिग सुपरमार्केट चेन्स. व्हेन यू एंटर द शॉप यू टेक योर ट्रॉली, यू पुट योर स्टफ इन देम एंड देन यू गो टू द बिलिंग काउंटर वेयर समबडी स्कैन्स योर प्रोडक्ट एंड देन यू पे फॉर दैट. यहाँ पे भी इज़ द सेम थिंग, बट उसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड सेल्फ स्कैन जोन, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही स्कैन करते हो और फिर पे करते हो. There is basically no attendant for you to overlook what you're doing, but yeah, you have to just scan the barcodes and then do it. There are dedicated machines that help you do that. And अभी मैं वही करने वाला हूँ. मैं अभी शॉपिंग जा रहा हूँ, अपने वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग को, और आपको दिखाता हूँ. This is again one of those things that I found completely new when I came here from India. So let's go and do some shopping. My shopping bag. अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है. There is no door for this lift. This is also one of the first things that I observed after coming here. In fact, I've lived in multiple building complexes, but I've never seen where lifts don't have door. So basically they have this sensor that detects if there is an obstruction, and if somebody puts their hand in between while the lift is traversing up and down, then it stops automatically.
अभी हम जा रहे हैं सेल्फ स्कैन, और ये जो सामने मशीन्स है ये सेल्फ स्कैन मशीन्स हैं। अभी हमें इन बार कोड को वहाँ पे स्कैन करना है और फिर पे करके घर जाना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी पे करने का टाइम है। यू पे, से नो, एंड देन चूज योर पेमेंट मेथड। Veuillez insérer votre carte et suivez le reste sur le terminal. अभी हमें ये बार कोड्स स्कैन करने पड़ेंगे यहाँ पे। दैट विल ओपन द गेट्स टू scan, and then my sale is validated. Now it's time to head home and make some nice dinner. Okay, so see you on the next one. When I first came to Europe, my first mode of transport was tram to explore the city. Trams are these amazing things that reminds me of our train rides in India. And as an Indian growing up in India, trains experience used to be something else. And these trams remind me of that. It's been days that I've traveled in a train. But yes, so trams I experienced for the first time in Europe. And I think in India we don't have trams anymore, except for Kolkata. I've been to Kolkata, I've seen a tram, but I've never traveled in one. So travelling in trams was the first time for me in Europe, and now I'm going to take you along with me in one of these trams. I'm waiting for my tram now. It's supposed to come from there, और अब ये ट्राम मुझे ले जाएगा मेरे अगले डेस्टिनेशन पे। ये होते हैं ट्राम स्टेशंस सिटी में। इस तरफ है रोडवेज और यहाँ पे है एक ट्राम स्टेशन। ट्राम्स एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, along with buses and taxis, और it's one of the most convenient modes of transport यहाँ पे। यहाँ पे आप ट्राम का टिकट पे कर सकते हो विथ योर बैंक कार्ड। और ये वैलिड हो गया है। लॉन्ड्री करना यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इंडिया में जनरली लॉन्ड्री करने के लिए इधर आपके घर में वॉशिंग मशीन रहता है, या फिर आप खुद से करते हो, या फिर आप मेड आपके कपड़े धोती है। यहाँ पे भी वैसे ही है, जिनके पास वॉशिंग मशीन है वो वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं। मेड यहाँ पे अफोर्ड करना थोड़ा एक्सपेंसिव है, और मेरे जैसे जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है बट वी यूज़ द लॉन्ड्री शॉप्स यहाँ पे, और लॉन्ड्री शॉप्स का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। मैंने यहाँ पे ऐसे शॉप्स कभी इंडिया में नहीं देखे हैं, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के लॉन्ड्री शॉप्स। एक तरह से डू इट योर सेल्फ टाइप के शॉप्स है ये। चलिए आपको एक छोटा सा टूर करवा दूँ। ये है लॉन्ड्री के वॉशिंग मशीन्स, और शायद आप यहाँ पे देख सकते हो एम का मतलब है मीडियम साइज मशीन्स, और एल का मतलब है लार्ज साइज्ड, और एक्सएल इसका ये मतलब है कि ये अराउंड 7 kgs के आसपास अकोमोडेट कर सकती है। दीज कैन अकोमोडेट अराउंड 10 to 12 kgs, और ये अराउंड 15 kgs कपड़े।
एंड इसी के बाजू में है एक प्रेसिंग मशीन या फिर इस्त्री करने वाला मशीन फॉर योर बेडशीट्स, ओनली कॉटन बेडशीट्स आफ्टर योर वॉश एंड ड्राई। और यहाँ पे है ड्राइंग मशीन्स, यहाँ पे आपके जो कपड़े वॉश होके आते हैं यहाँ पे आप उनको ड्राई करवा सकते हो। यू हैव टू चूज़ द टेम्परेचर एंड द ड्यूरेशन, और फिर वो मशीन्स अपने आप रोटेट होते होते हुए गर्म हवा से सारे कपड़े को सुखा देते हैं। नंबर 6 मशीन और मीडियम साइज, यहाँ पे चूज़ करना है मेरा 6। सो 1 टाइम वॉश इज़ 4.5 euros। और अभी मुझे पे करना पड़ेगा विथ माई बैंक कार्ड। ये है स्पिनिंग मोड, द लास्ट स्टेज ऑफ माई वॉश। तो आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से स्पिन हो रहा है ये वॉशिंग मशीन। कार वॉश इंडिया में बहुत ही आसान है। यू कैन ऑलवेज डू इट इन फ्रंट ऑफ योर होम, sometimes also on the street that's in front of your home. And even though it does cause a little bit inconvenience to the people around, but then it's kind of acceptable that that's a very common thing in India. यहाँ पे मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि लोग घर के सामने वाले स्ट्रीट पे अपने कार को वॉश कर रहे हैं। Going to a specific car wash shop is also a bit expensive here, but there's one convenient way to get car washed for people like me who don't have individual homes here, and if I want to get my car washed, there's this drive-in car wash, बहुत ही convenient है, which I have not seen in India, but it is very convenient that I can take my car in the morning before coming to the office, drive into this car wash. Within 10 minutes my car is cleaned and washed thoroughly, and then I can drive out just like that without getting out of my car. And I'm going to do that right now. I'm going to get my car washed and I'm going to show you as well. So let's go together and get my car washed. Bonjour, payer avec carte? Oui. Basic? Basic wash? Oui. 7 € alors s'il vous plaît. Ticket? Ah non, ça va. Merci. अभी गाड़ी न्यूट्रल में है और I basically had to drive my car on a conveyor belt, and now this conveyor belt basically takes my car forward. I have to just keep my car in neutral, and as you can see, all these liquids are being sprayed all across the car. These are the washing liquids, and you can see the machineries that are used to clean it. And then you have some water spray. And that, my friends, my car is washed in approximately 4 minutes 45 seconds. So it was that close. But there's one more thing that I want to show you. यहाँ पे कार वॉश के साथ you also have free vacuum cleaning, because of course you just don't want to wash your car exteriorly, but also you would want to clean your carpets and your seats. So there's free vacuum cleaners here where you can actually use them to clean up your car, and I'm going to do that right now.